Hi students, today we are going to population composition. As you know that we are studying the chapter 1 population. So we have already studied about the distribution, density and the growth of the population. So the last topic and the last component of this chapter is the composition of population. Now when we talk about the composition of population, what is the composition and what is the population composition? Composition means how a particular thing is made. मतलब कोई चीज किन किन अलग अलग थिंग्स से मिलकर बनी हुई है. सेम अगर हम पॉपुलेशन की बात करें या पॉपुलेशन कंपोजिशन की, तो द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, what is their age group, what is their sex, what is their language, how they wear, how they live, their lifestyle, social, ethnic characters, various things, religion, marital status, literacy, education, occupational characteristics. All these are make the compositions of the population. All these are the parts of the population composition. So, yeah, if we take an example, if we look at the particular state, the people wear various types of the clothes. People wear various types of speak various types of the language. They follow the different types of the religion. So all these, suppose there are the 5 types of the religions, then that is the religious compositions of the particular group of the population. Same मैरिटल स्टेटस हो सकता है कुछ कंट्रीज के अंदर, जो मैरिटल स्टेटस किस तरह का है लोगों का, इफ दे आर द मैरिड और द अनमैरिड, अर्बन एंड रूरल, all these are the parts of the, all these are the components of the population composition. So in this chapter or in this book, we will study about the rural and urban characteristics. मीन्स जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें अर्बन एंड रूरल का क्या रोल है, language, how the population of India is divided into the various language groups, religion, and the pattern of occupation. We will study about these factors in this chapter. So now, let's start. So first one, or the first component we are going to study is the rural and urban composition. Rural and urban composition. So, you might have seen that in the India, okay, so when we talk about the rural and the urban compositions, it is very important fact regarding the population, that how they live and where they live, what are the respective places of the residence. It is the very important thing or very important factor regarding the population, that in which areas or in if they live in the cities or the rural areas, because the characteristics of the population living in the rural is different than the urban. जो urban areas की population होती है या जो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफ द पॉपुलेशन इज रूरल और द अर्बन, and it is also significant for a country where about, and especially in regard of India, where about 68.8% of population live in the villages. So it's quite important for India to study about the rural and the urban composition of the population. And if we talk about the total villages in India, as we read that almost around 68.8% of the total population resides in रूरल एरिया. जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 68.8% गांव में रहती है. That's why there are around 6
40,868 villages according to the census of 2011, and out of them total 6,40,867 villages हैं, उनके अंदर 5,97,068 villages are the inhabited villages. मतलब टोटल जितने गांव हैं, टोटल गांव में 6,40,866. Out of them 5,97,068 villages are inhabited, मतलब उनके अंदर लोग रहते हैं. Some states like Bihar and Sikkim have the very high percentage of rural population. जो कुछ states हैं जैसे सिक्किम एंड बिहार है, वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन का कंपेरेटिव टू द अदर स्टेट्स ज्यादा परसेंटेज है. एंड स्टेट्स लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र है वेरी लेस percentage of the rural population. So two districts, Bihar and Sikkim has the high percentage of the population, and Goa and Maharashtra are the two states which have the low percentage of the total population. And if we talk about the union territories, just like the union territories have smaller proportions of rural population, except Dadar and Nagar Haveli. जो 7 यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ का जो अर्बन पॉपुलेशन की ज्यादा है, जस्ट लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, ऑल दीज आर द अर्बन एरियाज. तो वहाँ की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सेप्ट नगर एंड दादर एंड नगर हवेली. The size of village also varies considerably, and you may know that the size of the village. ऐसा नहीं कि सारे villages एक तरह के होते हैं. There are some very small villages, especially in the desert of Rajasthan and in the hilly areas or the mountain areas of Jammu Kashmir and the mountainous states. The size of the villages is small, and the average size for the less than 200 persons per village are inhabiting here. But in some states it is very high. In some areas the villages are bigger and their population is very much. For example, in the states of Kerala and the parts of Maharashtra, some villages have as high as 17,000 persons in a village. मतलब जो कुछ विलेजेज है जो माउंटेन्स स्टेट्स और रीजन के और रेगिस्तान के, देयर द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 2000 पर्सन्स. लेकिन केरला और महाराष्ट्र के कुछ विलेजेज है वहाँ पे 70,000 तक पर्सन्स एक विलेज के अंदर रहते हैं. सो द विलेज, जो विलेज हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज के. देयर आर सम बिग विलेज और देयर आर सम स्मॉल विलेज. The pattern of distribution of rural population of India reveals that both at intra-state and interstate levels, the relative degree of urbanization and extent of rural-urban migrations regulate the concentration of rural population. और जो pattern of distribution of rural population in India की, वो दोनों ही इंटरस्टेट के अंदर भी माइग्रेट होती है और इंट्रा स्टेट के अंदर भी माइग्रेट होती है. और जो ये माइग्रेशन है, दिस डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. मतलब देयर आर सम विलेजेस इन द सम स्टेट्स वेयर द माइग्रेशंस फ्रॉम रूरल टू अर्बन इज वेरी मच, एंड बिकॉज इट अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरियाज. ऐसा नहीं है कि जो माइग्रेशन होता है वो सेम स्टेट में होता है. कुछ जगह में कुछ स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन होता है. फॉर एग्जांपल द माइग्रेशन लेबरर्स ऑफ द बिहार गो थ्रू आउट द कंट्री. पूरे देश के अंदर अलग अलग सिटीज के अंदर काम करने जाते हैं. तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, उसको वह डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे वह कम ज्यादा होती रहती है. And the growth rate of urban population has, and जो urban population है in the few years or in the recent years
the population of urban areas is accelerating, it is increasing. जो cities हैं या जो urban areas है वहाँ की population कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. And the reason behind is that in the cities the people get the good quality of education, good economic development and the health and the hygienic conditions. क्योंकि जब लोग गांवों से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? Because they get the good chance of the education, they get the good economic opportunities and the economic development, and there is also the good facilities of the health and the hygiene. That's why the population of urban is increasing and the population of the rural areas is decreasing. And in the almost all the states and union territories, there has been a considerable increase of the urban population. Or in every state and the union territories, the population and the population of the urban has been considerably increasing. मतलब हर जगह की population जो बोले वो स्टेट हो या कोई सा भी स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह की population increase होती जा रही है. This indicates both development of urban areas in terms of socio-economic conditions and an increased rate of rural-urban migration. And it indicates that in the urban areas, there is the development of the urban areas in the social economic conditions. मतलब urban areas की social and economic conditions improve होती जा रही हैं. साथ ही the migration from rural to urban is also increasing. It is increasing day by day. If you take the example, the main road link and railroads in the North Indian plains, the industrial areas around Kolkata. Means अगर हम एग्जांपल लेते हैं इस चीज का कि जैसे सिटी जो अर्बन एरियाज का सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ रही हैं और रूरल एरियाज की से जो अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो उसका एग्जांपल लेते हैं कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जो रोड के किनारे वो जो रेल रोड के किनारे वाले प्लेसेज है, इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड कोलकाता, कोलकाता के आसपास का जितना भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना एंड जालंधर. These areas have been, the population of these cities or these urban areas have been increasing very fast. And in the places of the railroad and the near the railroads and the link roads. अगर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे लाइक इन हरियाणा पानीपत, सोनीपत और गुड़गांव, एनसीआर, इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है क्योंकि देयर इज द गुड कनेक्टिविटी फैसिलिटी एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल and the economic and social development is available in this area. और अगर दूसरी जगह की बात करें जैसे इन एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट्स ऑफ द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, जो दे आर गुड इन द एग्रीकल्चर पार्ट्स ऑफ द मिडिल एंड द लोअर प्लेन गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड Western Rajasthan, remote hilly tribal areas of northeast, along the flood-prone areas of peninsular India, along eastern part of Madhya Pradesh, the degree of urbanization has remained low. इन areas के अंदर जो urbanization है वो बहुत स्लो हो रहा है, जबकि जो दूसरी जगह है जैसे जहाँ पे अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, अच्छी तरह से एग्रीकल्चर है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन जल्दी हो रहा है. उसी की जगह जो दूसरे कुछ स्टेट्स हैं, जो जगह हैं जहाँ पे अच्छी तरह से एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, ट्राइबल एरियाज है, हिली रिमोट एरियाज है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन स्लो है. वहाँ पे मतलब सिटीज की जो पॉपुलेशन है वह धीरे से बढ़ रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल और
इंडस्ट्रियल सिटीज है, वहाँ पे सिटीज की पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है. नाउ दिस वाज द composition, means urban rural composition of the population. Now second part of the composition is the linguistic composition. Linguistic composition means the distribution of the population based on the लैंग्वेज द पीपल स्पीक. मतलब जो लोगों की लैंग्वेज है, जो लोगों की भाषा है, उसके हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितने पार्ट्स में बटी हुई है. एंड you may have heard that India is has the linguistic diversity. मतलब there are the many languages are spoken in the every 100 or 200 kilometers. The language of the people changes. And according to the Grecian Linguistic Survey of India 1903 to 1928, there were 179 or 179 languages and as many as 554 dialects in the country. So India has the great diversity of the languages and the linguistic groups. जो लोगों की भाषा बोलने के जो ग्रुप्स है उनकी इट हैज अ वेरी लार्ज डाइवर्सिटी. एंड इन द कॉन्टेक्स्ट जो अगर हम 1903 से 1928 के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो दैट टाइम देयर वर 179 लैंग्वेजेस, टोटल 179 लैंग्वेजेस थी और 554 डायलेक्ट्स. डायलेक्ट्स मीन्स लोकली बोली जाने वाली बोली, just like the Mewari, Marwari, Hadooti, these different types of the languages जो कि ब्रज, ये सारी डायलेक्ट्स हैं. और अगर आज के बारे में बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो देयर आर टोटल 22 scheduled languages जो कि those are government approved, and there are the number of non-scheduled languages in the country. Among the scheduled languages, the speakers of the Hindi have the highest percentage, and the Sanskrit and the smallest group are of the Kashmiri and the Sanskrit languages. मतलब अगर लैंग्वेज के बात की तरह से बात करें तो it will have a very large diversity, and mainly the out of the, if we talk about the percentage, the highest number of the people who speak the language with the Hindi means the सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो है हिंदी, और जो सबसे कम बोलने वाले हैं वो है कश्मीरी, संस्कृत और some other languages locally. Apart from them, there are the total the Indian population is divided into the 4 linguistic groups. जो mainly जो Indian population है उसको 4 linguistic groups के अंदर डिवाइड किया है. That I am showing to you. If you see in this, there are the total. If you see in this, in this table, there are the total 4 linguistic groups of the India, or there are the total 4 families of the languages, and out of them there are the some subfamilies, and they have the some groups and the branches. The first linguistic or the classifications of the modern languages is the first one is the Austric, and it is the Nasada. It is also called as the Nasada. It has it has 1.38% of the total people speaking, and it's it also has the some subfamilies: Austro-Asiatic, Austro-Asian, and then there are some branch Mon, Khmer, and the Munda, and this language is spoken in these areas: Meghalaya, Nicobar Islands, West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, and outside India. So this is the first group of the Austric language group or family. Second one is the Dravidian or Dravida. This is the Dravidian and the Dravida.
And the branches are the South Dravidian, Central Dravidian, and North Dravidian. Most of this language is spoken in the South India, just like Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, MP, Odisha, and Maharashtra, and some parts of the Bihar, Orissa, West Bengal, and Madhya Pradesh. The third group or the third family of the language is the Sino-Tibetan, or it is the Tibet and the Myanmar. That is spoken in the, it is the Sino-Tibetan, and it is spoken in the some parts of the Myanmar and the Tibet. And they are this language is spoken in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, the Tibetan Himalayan, then the North Assam, Arunachal Pradesh, and Assam and Myanmar, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. And the fourth group is the Indo-European, and which is the highest number of the speakers. The total people speaking this language is 73%, and these are also called as the Aryans, and these are the Hindi speakers of the India. In this, the subcategory is the Indo-Aryan, and then there are the Iranian, Dardic Indo-Aryans. People speaking outside India, Jammu Kashmir, and the north, especially the north part of the India or the North India. These are the areas. These are the groups of the main four groups of the languages spoken in India, and these are broadly divided into the four groups. So today we have studied about the compositions of the population, and it is divided, and we have studied the two compositions. One is the urban and the rural population, and the division of the population based on the various